Dear students, welcome to virtual class of Municipal Corporation of Greater Mumbai. I am Sreekumar. The class is for 6th standard students. Subject is mathematics. Let us begin the class. Dear students, the class is for 6th standard and the topic today is bar graph, a representation of data in the form of pictures or bars. That is what is the fundamental of bar graph. Let us learn about it and try to understand about it in a better way. You know that we need some methodology by which we can represent data. Data means कुछ numbers. For example, आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है, if you thoroughly go through it, you can see that it is written India over here, Sri Lanka over here, runs over here, overs over here. From this we conclude that this is something related with cricket, no doubt. ये cricket का कुछ data है. There are some balls over here. Here also. All these are indicating that something related to overs. Overs are shown. Runs are shown. That means India Sri Lanka का कुछ मैच हो रहा है या मैच हुआ है, उसमें अलग अलग ओवर्स में मिला हुआ रन्स के बारे में कुछ पिक्चर वाइज रिप्रेजेंट किया है. अगर काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ओवर्स का कुछ गेम चल रहा था. 20 होगा, कुछ भी हो, हमको मालूम है पिक्चर के थ्रू कुछ डाटा बना रहे हैं. ये क्या है? टाइप ऑफ व्हीकल्स, bicycle, motorcycle, auto rickshaw, many such things are shown. What must be this? It is telling us about some data related to bicycle, motorcycle, auto rickshaw, bullock cart, etc. And if you are asked to write about how many bicycles are there in like a number column here, you will simply count and write 1 2 3 4 5 6 are there. But if it is said that एक साइकिल का मतलब एक साइकिल नहीं है, one picture is having a meaning, एक पिक्चर का मतलब 5 व्हीकल है, तो क्या हो गया? एक साइकिल है तो 5 व्हीकल, तो 6 है तो 6 into 5 30 है. We got an idea. We can represent 30 bicycle by drawing 6 bicycle because each bicycle represent 5 vehicles. But it is not easy to draw pictures of cycle का पिक्चर ड्रॉ करना, मोटरसाइकिल का ड्रॉ करना, ऑटो रिक्शा का ड्रॉ करना, बुल्लक कार्ट का ड्रॉ करके सब कुछ मैथमेटिकल डाटा दिखाना बोले तो नॉट एन इजी जॉब. इजी भी नहीं, जैसा भी प्रिंट बुक में दिख रहे वैसे उतना अच्छा दिखेगा भी नहीं. अब अगर हमारे हाथ से बनाए तो we need to adopt some other method. This is coming under pictogram which you studied in 5th standard. Show things with the help of pictures. पिक्चर से आप चीजें दिखाएंगे या डाटा दिखाएंगे स्पेशली. तो ये उतना इजी काम नहीं है, टाइम टेकिंग काम है, इसमें बहुत टाइम जाएगा. तो क्या फिर दूसरा मेथड क्या है? बहुत मेथड. उसमें एक मेथड आपको ये चैप्टर में पढ़ना है. What is that? That method is by showing the things on a graph paper. जो अभी दिख रहे हैं ना इधर आपके बाजू में, आपके डायग्राम, वो ग्राफ पेपर है.
graph paper. Sorry, graph is having a meaning drawing. So this is a paper which is used for drawing. But what is the peculiarity of the paper? The paper is having number of small squares and big square also. And it is also written here X. Written here X. Written here Y. Written here O. What are all these things? Is it something always same and universal? Yes. This is the universal method of representing in a graph. A graph will be having a y-axis which is vertical and a horizontal x-axis, and a common origin for both y and x which is named as O. This is common for all graphs. तो इसके अंदर फिर साइकिल, मोटरसाइकिल, बुल्लक कार्ट सब ड्रॉ करेंगे? No, there is no such system. Using a graph, you can represent the data very differently but cleanly. What is that? I will show you. Your textbook dependent. ग्राफ पेपर का कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, येलो होगा, कुछ मतलब नहीं. बट ग्राफ पेपर में ऐसा कुछ पिक्चर दिया आपको, देखो वही चीज है. कैसे दिया? We have given it in such a way that y-axis उधर ही है, x-axis इधर ही है, common origin O इधर ही है, और इधर लिखा है scale on y-axis. This is y-axis. उसका scale के 1 unit is equal to 5 acre. What is this 1 unit? 1 unit is this span. इधर से इधर तक जो distance है उसको 1 unit बोलते हैं. इधर से इधर तक जो distance है उसको भी 1 unit. So the graph is full of 1 unit वाला squares है. तो 1 unit is equal to 5 acre. मतलब एक यूनिट अगर y एक्सिस में ऊपर या नीचे गया तो 5 व्हीकल्स के बराबर है. तो इधर कितना व्हीकल था? 30 इधर लिखा, 30, 25, 20, इसलिए 5 का मल्टीपल किया. ईच यूनिट इज ऑफ 5 व्हीकल्स. तो नेक्स्ट इज 10, 15, 20, 25, 30 व्हीकल तक आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इफ यू इंक्रीज द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर बार, यू कैन रिप्रेजेंट मोर व्हीकल्स. So in our case, there were 6 into 5, 30 bicycles, 25 motorcycles, 5 rickshaws, and 15 bullock carts, represented in the form of bars. ये जो खंबा दिखते हैं ना standing straight, we call it as bar. Bars are showing. and नीचे इधर लिखा bicycle, motorcycle, rickshaw, bullock. ये क्या है? name of vehicle. तो इधर लिखना है. और vertically जो y axis क्या दिखा रहे हैं? number of vehicles. each unit is 5. so इधर हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे दिखाया. अभी चाहिए तो आपको वीडियो पॉज कर सकते हैं, पीछे जाके वापस मैं क्या बता रहा था वापस सुन सकते हैं बार ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के बारे में. How bar graph is presented to you. There will be a y-axis showing some data, x-axis showing some data, and both together will make bars, which will tell us very easily. कुछ count नहीं करना है. We say that bicycle is 30, motorcycle is 25, rickshaw is only 5, bullock cart is 15. So graph will tell you the things simply, clearly, and quickly. सब quality एक साथ है. Let us go ahead. What more is there in store for you? Here is a graph and a set of questions are asked. Right? A set of questions on graph. ऐसा क्यों? इसलिए कि बार ग्राफ अच्छा है, बहुत अच्छा दिखता है, इजी है, क्विक है. तो फिर क्वेश्चन का आंसर करो ना फिर. दिस इज अप्रोच. द टेक्स्ट इज वेरी गुड. आपको बार ग्राफ ठीक अच्छा लगता है, जल्दी हो जाएगा लगता है, तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर करो. देखता हूं. अगेन देयर इज एक्स एक्सिस गिवन, देयर इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, कॉमन origin.
देन सिटीज का नाम दिया है पांचगनी, पुणे, चंद्रपुर, माथेरान, नासिक। इधर क्या लिखा है टेम्परेचर। हाँ अभी समझ में आया। दिस ग्राफ इज टेलिंग अस अबाउट द टेम्परेचर्स in degrees Celsius. One unit is 5 degrees Celsius. In degrees Celsius in different cities on a particular day. So temperatures बता रहे, कैसा बता रहे? In degrees Celsius. In cities. As on today Friday. Friday का temperature बता रहे cities में. फिर question, what data? क्या है? What data is shown on the vertical and horizontal lines? Vertical lines में आपको मिलेगा temperature, horizontal lines में आपको मिलेगा cities. Correct? Which city had the highest temperature? ये वाला वो कौन है? चंद्रपुर. So right, चंद्रपुर. Which cities had equal maximum temperature? Equal कौन से cities का? इसको है पांचगनी और माथेरान. ठीक है, यू राइट पांचगनी एंड माथेरान. विच सिटीज हैड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री? 30 डिग्री वाला कौन सा है? दिस इज आल्सो 30 डिग्री. सो देयर आर टू सिटीज, पुणे एंड नासिक. मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पांचगनी एंड चंद्रपुर? चंद्रपुर हमारे पास है 35 है और पांचगनी हमारे पास है 25. क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस किसमें? मैक्सिमम टेम्परेचर. सो वी नीड टू फाइंड आउट 35 माइनस ऑफ चंद्रपुर माइनस दैट ऑफ पांचगनी 25 which is equal to 10 डिग्री सेल्सियस. सब क्वेश्चन का आंसर मिल गया. मतलब ग्राफ फॉर्मेट में दिए तो जल्दी समझते हैं और जल्दी आंसर होता है और कुछ कैलकुलेशन का मुसीबत नहीं, जल्दी मिल जाता है. तो शोइंग डाटा इन ग्राफिकल फॉर्मेट इज गुड एंड फर्स्ट मेथड इज दिस बार ग्राफ. अच्छा लगा तो फिर बार ग्राफ कैसे बनाता है, हाउ द ड्राइंग इज डन, वो भी पढ़ना अच्छा है. अच्छा लगे तो सीखना अच्छा है ना. ड्राइंग है बार ग्राफ, क्या दिया है ड्रॉ करने को. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू सी हाउ द गिवन डाटा इज शोन इन बार ग्राफ. इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स इन द नर्सरी इज गिवन. प्लांट नर्सरी का प्लांट्स का नाम दिया. क्या क्या प्लांट्स है? मोगरा, जाय, हाइबिस्कस, क्राइसेंथेमम. कितने हैं? मोगरा 70, जाय 50, हाइबिस्कस 45, क्राइसेंथेमम 80. अभी क्या करना है? वी हैव टू मेक ग्राफ. तो ग्राफ बनाने का स्टेप्स क्या है? पहले तो हमको ग्राफ पेपर चाहिए. तो आपको दुकान में जाना पड़ेगा, मुझे स्क्रीन में ढूंढना पड़ेगा. ग्राफ पेपर आ गया. ग्राफ पेपर, डाटा भी आ गया. मोगरा 70, जाय 50, हाइबिस्कस 45, क्राइसेंथेमम 80. क्या बनाने जा रहे हैं? इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स इन अ नर्सरी इज गिवन. तो व्हाट आई वुड से, information on different types of plants. I would write here the graph का नाम पहले लिखेंगे. क्या है नाम ग्राफ का? types of plants and its numbers. Correct? Information about plants in a nursery is given. Okay, we will write down types of plants. Here हम लिखेंगे, sorry जरा नीचे लिखना अच्छा होगा, जगह चाहिए ना. Types of plants, ये में इधर लिखेंगे कौन सा plants. और इधर क्या लिखेंगे मैं? number of plants. Number of
प्लांट्स, ये मैं इधर लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ऑलरेडी दे चुका है, ओरिजिन भी दिया है। एक्स एक्सिस में मैं टाइप ऑफ प्लांट्स का नाम लिखेंगे, क्या क्या है वो, और मुझे बार ग्राफ बनाना है तो उसको थिकनेस के बारे में भी सोचना है। मुझे कितना प्लांट्स का ड्राइंग बार बनाना है, 4। सो आई विल सी, आई विल मेक लिटिल बिट थिन, क्योंकि ये डिजिटल है, उसका हिसाब से बनाना पड़ेगा मुझे। So I will start doing it, leaving one space. I will draw one here, which I would say Mogra. Next I will leave a space and will write Jai. इसको इधर खड़ा कर देंगे. Leave a space and will write hibiscus. Leave a space and I will write at the end chrysanthemum. Okay. So positioning on x-axis. Then what I should say? I should do. Let me see. I had given a subscript for this. Take the graph paper, center, type and number of plants, that is what is our plan. Draw x and y axis and draw intersection. Write the name of the plants on the x-axis at equal distance. The number of plants is divisible by 5. कितना है plants total? 70, 50, 45, 80. सब 5 से divisible है. That means 1 centimeter is equal to 10 plants करेंगे, ताकि हमको 80 maximum में 8 steps ऊपर जाना पड़ेगा. So we will write down on y-axis, what we'll write, 1 centimeter is equal to 5 plants. Okay, तो किधर लिखना है? वो y-axis का scale है. Scale on y-axis क्या लिखेंगे? 1 centimeter is equal to 10 plants. अभी हम इसका एंट्री कर देंगे. Correct? Now we will put the entry into the graph. Y-axis में क्या है? Number of plants. तो उधर भी कुछ करना पड़ेगा, बराबर इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा. How will we write? We will write 10, 20, मार्किंग करता हूँ, 30, 40, 50, 60, 70, 80, टॉप तक आ गया. ओके, स्केल भी लिख दिया. नाउ वी हैव टू लुक इनटू द डाटा. वेयर इज द डाटा? मोगरा 70, ये मोगरा है, मोगरा का कॉलम है. 70 इधर है, हम मार्क करेंगे 70 मोगरा के लिए. ओके, नेक्स्ट वन इज जाय 50. 50 इधर आएंगे. 311 स्क्वायर यूनिट बैलेंस. और हाइबिस्कस 45, हाइबिस्कस इधर है, 40 इधर है, 50 इधर है, 45 इधर आना पड़ेगा. नाउ द लास्ट वन इज क्राइसैंथेमम 80. ओ, हमारा स्क्रीन लिमिट हो गया. मैं इसको जरा हटा सकते हैं, देखता हूँ स्केल टेम्पररली. मेरा डिजिटल आने से वो फायदा है. सो इट इज 80. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? वी हैव टू ड्रॉ, लिटरली ड्रॉ करना है. आई हैव अ फैसिलिटी टू ड्रॉ, वो मैं मेक यूज कर रहा हूँ अभी दैट आई कैन डायरेक्टली ड्रॉ लाइन्स. आई थिंक, लेट मी सी. फ्रॉम हियर आई विल ड्रॉ लाइन हियर, another line from here to here. This is the bar of Mogra. ठीक है. Then you are having Jai 50.
जाय 50, हाइबिस्कस 45। ये आपको खुद करना है, आप खुद करेंगे तभी आपको इसका एंजॉयमेंट मिलेगा। गलत होता है तो और एंजॉयमेंट मिलेगा। क्राइसैंथेमम 80, okay, so we could conclude that somewhat. Okay, so we could make bar graph. Now bar graph thoda kala kala bar graph. If you want, I can fill up that, but it will be taking lot of my time. तो डार्क कलर से भर सकते हैं, संभाल के करना पड़ेगा। बाहर गए तो गया ना, मजा गया। It's not that easy. डिजिटली मैनेज करना पड़ रहा है। Second. Now what I will do? So you will make the bar graph beautiful by using proper filler over there. आपको डिजिटली नहीं करना है, आपको बुक में करना है। एक न एक दिन आपको ड्रा एग्जाम भी आएगा। Now it is online because of COVID issue. Later you will draw this, then you will make it more beautiful than what I have drawn. Somewhat okay. So just I have to show you that the bar graph is never an unfilled, it is always a filled graph with some color pencil or something like that. So I am trying in this digital world how to fill up this gap. थोड़ा इसका difficulty भी है. And I also should think about time I am spending with this. Very important. Very important for me how much time I am spending for showing you. Okay. So just trying whether it is possible. Earlier it was more beautiful, I know that, but now the compulsion that you should fill up. So you got bar graph, and bar graph itself will tell you that how much is what. 10 plants 1 centimeter, we know that 70 mogra plants, 50 jai plants, 45 hibiscus plants, and 80 chrysanthemum plants are there, which is very clear from the graph. तो ग्राफ हमको सब कुछ क्लैरिटी देता है, अच्छा है ना। फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को प्रेफर करेंगे। नाउ व्हाट वी लर्न, इसके लिए बोर्ड साफ करना है। डिजिटल स्क्रीन क्लीनिंग, robo clean the board. Okay, now I know every bar in the graph should be of equal width. Distance between any two adjacent bars should be equal. All bars should be of appropriate height. ये तीनों कंडीशन आपको satisfy करना है। So my dear students, your practice set number 19 of your textbook is a big interesting thing for you. Practice set number 19 you will start with। पहले दुकान है तो दुकान में जाके ड्राइंग का शीट बना के लेके आएंगे। ड्राइंग का शीट मतलब बार ग्राफ पेपर लेके आएंगे। ग्राफ पेपर लेके आने के बाद आपको
शुरू करना है। शुरू करने के पहले ये वीडियो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल सब अच्छा से स्टडी करना है। ड्राइंग करने के बाद खुद देखना है बराबर आया क्या नहीं, वो तो आपको समझेगा। दूसरे को भी दिखा सकते हैं, माँ बाप को और ब्रदर्स सिस्टर्स को, दे विल आल्सो अप्रिशिएट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल चैप्टर, लेकिन आप भी सिंपल है, आप भी छोटा है, तो उसके हिसाब से मुझे बताना पड़ता है। यू आर इन 6th स्टैंडर्ड, तो पेंसिल, स्केल, इरेजर, ग्राफ पेपर, साथ साथ आपने देखा हुआ वीडियो, आपके पढ़ा हुआ टेक्स्ट बुक और आपके छोटे बड़े दिमाग लगा के अच्छा से ग्राफ बनाओ। बाद में चाहिए तो कोविड पैंडेमिक के इन्फेक्शन के ऊपर भी ग्राफ बनाओ। महाराष्ट्र में, अपना राज्य में हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितना है उसके ऊपर भी एक ग्राफ बना सकते हैं। आपको घर वालों को इम्प्रेस कर सकते हैं, देखो मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया करके। ओके, थैंक यू। Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.